Assalamu alaikum students. Welcome to Tutors Time. My name is Akif Nawaz Khan and we have started our discussion of parts of speech, and we've already discussed nouns, different cases of nouns, and along with that we already discussed different kinds of verbs, transitive, intransitive and ditransitive verb. So it's our third lecture, and we'll be talking about adjectives in a very simple and easy way. And along with that, we'll be talking about different degrees of adjectives like positive, comparative, and superlative degrees. So, without wasting any more time, let's take on this topic directly. So, first of all, adjective. Adjective is basically a part of speech which usually modifies a noun or a pronoun in a sentence. So simply its definition would be that words that modify noun or pronouns in a sentence. So simply we can say in Urdu that ऐसे अल्फाज जो कि nouns और pronouns को modify करते हैं, means extra information हमें प्रोवाइड करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में, सो हम उसको कहते हैं कि दीज आर एडजेक्टिव्स. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट अ वेरी सिंपल सेंटेंस दैट आई डू नॉट लाइक जंक फूड्स. सो अब यहां पर देखें, इन दिस सेंटेंस food is a noun because it's the name of something, and we've already defined and discussed noun in our first lecture, and you can watch it, and the link will be is already given in the description. Okay, so here food is a noun, and here an extra information has been given by the word junk. So it describes and it categorizes, it gives us further information about the food, that which type of food we are talking about. So basically we're talking about junk foods. So in another sentence, if I say that I like to eat fresh vegetables. So here you can also see that vegetables is the noun, and fresh usually describes it. Fresh is describing this vegetable in this sentence. It gives us extra information. So we can say that it is modifying vegetables. It is categorizing it. It is giving us more information about which type of vegetables, fresh vegetables. तो अगर मैं उर्दू में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, तो ऐसे अल्फाज जो कि मॉडिफाई करे, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे नाउन्स के बारे में, पहले आप देख सकते हैं जंक फूड्स. सो फूड्स के बारे में हमें बताया जा रहा है कि कौन किस टाइप के फूड, जंक फूड. और अगर हम सेकंड एग्जांपल में बात करें तो वेजिटेबल्स, किस टाइप के वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट जंक एंड फ्रेश बोथ आर, junk and fresh both are adjectives here. अच्छा, अब अगर हम एडवांस लेवल की बात करें, सो वी ऑल्सो कॉल इट एडजंक्ट्स. एडजंक्ट्स मीन्स जो कि मॉडिफायर्स होते हैं. वर्ड्स दैट मॉडिफाई अदर वर्ड्स आर कॉल्ड एज एडजंक्ट्स. और एडजंक्ट्स को हम यूजुअली डिस्कस करते हैं फ्रेजेस में, जिसमें हमारे पास एक हेड वर्ड होता है और बाकी हमारे पास एडजंक्ट्स होते हैं. बट दिस इज जस्ट टू लेट यू नो व्हाट आर एडजंक्ट्स, एंड लाइक इट्स द सेम नेम, it's the other name of modifiers. So I think it's quite clear to you. Now we'll be talking about different degrees of adjectives. Okay, so the first degree is, first let me name all the degrees of adjective. The first one is positive, comparative and superlative degrees. So we'll be talking about the first one, that is positive
degree. So positive degree of adjective is a kind of adjective in which we simply state the quality or the characteristics of a characteristic of a noun. For example, if I say that she is a smart doctor. So here, doctor is a noun and smart is basically modifying the noun, that which type of doctor is she. So she is basically smart. So here I am just stating the quality of the noun without comparing it with other doctors or without saying anything else, but simply we are just talking about that which type of doctor is she. So that is why we can say that this is a positive degree. अगर उर्दू में हम simply जल्दी जल्दी कहें तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्मार्ट डॉक्टर है. सो स्मार्ट इसमें देखिए हम सिर्फ उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर नॉट कंपेयरिंग इट with other doctors or with anything else. So that is the positivity degree. The second one is comparative degree. Okay, so from the term, it is quite clear that there will be comparison. So adjectives that are used to compare between two different individuals, two different places, or two different persons. जिस तरह हम nouns को define करते हैं, person, place, a thing, जिसमें abstract एक हमारे पास exception आ जाता है. But यहाँ पर आप देख लें comparative degree. So इसमें हम comparison करते हैं दो चीज़ों के दरमियान. सो अगर इस सेम सेंटेंस को मैं ले लूं और मैं कहूं कि शी इज अ स्मार्टर डॉक्टर देन हर फ्रेंड. सो यहां पर जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस. सो आई हैव यूज्ड अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव स्मार्ट. सो यहां पर मैंने लिखा है कि स्मार्टर. सो शी इज स्मार्टर. नाउ आई एम कंपेयरिंग इन दिस सेंटेंस she with her friend, but in the profession of a doctor. So we can say that she is smarter than her friend. Ab the third degree is. अच्छा, अब अगर मैं इस कंपैरेटिव डिग्री को भी उर्दू में सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ऐसे होगा, ऐसे अल्फाज, ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें हम दो इंडिविजुअल्स, दो लोगों या दो जगहों या दो चीज़ों के दरमियान मुआजना करते हैं, और वो किस वर्ड के थ्रू? एडजेक्टिव के थ्रू. यहाँ पर देखिए स्मार्टर. सो इट वुड बी बेसिकली इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू different things, not different things but same things on the basis of the qualities. Acha, so the third degree is superlative degree. So superlative degree, जिस तरह हमने कहा था that in positive degree we just simply state the quality or characteristic of an individual thing, a place, and in comparative degree we then compare two different individual things and places with the help of an adjective. But when it comes to superlative degree is a kind of superlative degree of adjectives is a degree in which we make the prominence of an individual place or thing and prioritize it and specialize it overall, and we give it a specific place, a proper special place. Now if I take the same example, so it would be like that she is the smartest doctor among all. अच्छा, अब इस सेंटेंस को आप देख लें. I have taken the same word just because to make the comparison and to make it easier to understand. तो यहाँ पर आप देखें smartest. I have used the superlative degree of adjective and it shows that she is the only smartest, and I have compared it with all the doctors around the world or around, like those who are working in that specific hospital, those who are in the community that are known to us. So यहाँ पर देखें मैंने उनको prominent किया हुआ है through this superlative degree of adjective जो कि है smartest.
अच्छा, अब अगर मैं सिंपली इन तमाम को लाइक इन जिफी में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ऐसे होगा कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में, तो वो ये है, पहले हम पॉजिटिव डिग्री है हमारे पास, और इसका मतलब ये है कि हम सिंपली क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करते हैं, स्टेट करते हैं, हम उसको बोलते हैं, जिस तरह मैंने स्मार्ट का एग्जांपल दिया है। फिर हमारे पास एक कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बट वो कंपैरिजन सोली ऑन द बेसिस ऑफ एन एडजेक्टिव, जिसमें हमारे पास क्या है, स्मार्टर। स्मार्टर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, इस क्वालिटी को हम कंपेयर करते हैं दो लोगों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। सो इसको, ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। और थर्ड वन जो हमारे पास है, सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम एक प्रोमिनेंट शो करते हैं, प्रोमिनेंस शो करते हैं एक इंडिविजुअल थिंग या प्लेस की। और यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है स्मार्टेस्ट। सो हमने यहाँ पर लिए है स्मार्ट, स्मार्टर एंड स्मार्टेस्ट, और इसके थ्रू हमारे पास और भी एडजेक्टिव है जिसको हम और तरीकों से भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, और उसका अगर हम कंपैरेटिव बनाए, so it would be like more beautiful, and then its superlative degree would be most beautiful. So these are the two ways through which we can make positive, comparative and superlative degrees of adjective. I hope you would have liked this video, like in a sense that you would have understood it quite properly. And if you have anything to ask, if you have any query, any question, you can write down that in the comment section. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो को एक्सप्लेन करूँ, किसी और टॉपिक के बारे में बात करूँ, सो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और इंशाल्लाह दैट विल बी आवर प्रायोरिटी टू एक्सप्लेन इट। और इसके साथ साथ जितने हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आपके लिंक में हम ये डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप एनी टाइम you can contact us through comment section. I hope you would have liked it. Allah Hafiz. Thank you.